हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेवा किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ चटपटा चिली पनीर। उसके लिए ये सामान चाहिए: लहसुन, ग्रीन चिली, प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्नफ्लोर, मैदा, पनीर, नमक, मिर्च, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर। चिली चिली इसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं और प्याज को भी ऐसे खोल के रख दिया। तो पनीर लेना है सबसे पहले। पनीर को हम ले लेंगे। ये 200 ग्राम पनीर लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा मैदा ले लेंगे, उसे मैरिनेट कर लेंगे। जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक हम ये सॉस बना लेंगे। सबसे पहले हम इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे। चिली सॉस, और विनेगर, सोया सॉस। कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच लिया। अब इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो लहसुन डाल देंगे। चिली आप अपने हिसाब से डालेंगे। इसके बाद ये प्याज प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा पिंक पिंक हो जाएंगे, उसमें ही हमको फ्राई करना है।
थोड़ा सा इनका कच्चापन चला जाएगा तो बहुत पकाना नहीं होगा। अब इसमें हमने तीनों साथ से इसको मिला देना। अब नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि सॉस में भी है, थोड़ी सी रेड चिली। इसमें थोड़ा पानी डाल, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। जब तक ये सॉस पकती है जब तक ये सॉस पक रही है पनीर को थोड़ा शैलो फ्राई कर लेंगे। तेल गरम होगा, मैं इसमें पनीर के टुकड़े रख दिया। बस सॉस भी थिक हो रही है। चटपटा चिली पनीर बन गया। ये देखिए मेरा कलर कितना अच्छा आ गया। ये फ्राई हो गया।
फिर इसमें पनीर के टुकड़े डाल दें। अब ये बन के तैयार हो गया चटपटा पनीर। इसको सर्व निकाल लेते हैं। बहुत ही इजी है, बस आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए, अब समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।